Today we are starting with a revision of the class that we have covered yesterday. So yesterday I have explained you two programs. One was of factorial value. We have been given a number and we have to find the factorial value of the number. And we have done this using recursion. This is the first program that we have done yesterday. And another program that we have done was we have to display natural numbers. Okay, these two programs are showing natural numbers. The first one is showing natural numbers in descending order, and the second one is showing in ascending order. Okay, so these were the things that we have done yesterday. So let's revise these programs today and then we'll do some more programs. Okay, so this was the program that we have done using recursion. Let me erase the text that has been written. Pointer is not working. Chaliye. So we have written a function def fact, and within we have passed an argument n. Okay. Now we have called this function for a number 5. Since this function is being called from outside of the method, so that's why this call will be called external call, right? We are calling this function from any other program or any other main module, so that's why this call will be called as external call. So we have called this method, we have called this function with 5. So the first value that will be received to n will be 5. So if n is equal to 1, then we have to return 1. This is the terminating condition for factorial. Because if we have been asked to find out factorial value of 1, so we are not supposed to do any calculation. We can directly tell that the factorial value of 1 is 1. Now, if it is not 1, so in this example it is true. For this particular instance it is true because the value of n is 5. So we'll return 5 into factorial 4. So this was the thing that we have written here, right? So next recursion will be with factorial 4. Now when this function will be called with factorial 4, when factorial 4 will be called, so the next value of n will be 4. Again this condition is false, then recursion will be done with 4 into factorial 3. Okay, we'll go back this statement, we'll go back again with new value of n, that is 3, and this time 3 into factorial 2 will be returned. So we'll come back with a new value 2, and still this is false, so we'll return 2 into factorial 1. This statement. Okay, when this function will be called with 1, so this condition will be true. When this will be true, then it will return 1. Now you can see in this statement there are two statements. One, you have to return the value of n, other you have to find out the value of factorial n. Now what we are doing, we are finding the value of factorial n minus 1. Every time when we are executing this line, we are being forwarded to a next statement, next function, which is calculating the next value of n, which is calculating factorial value of n minus 1. Okay, which is calculating factorial value of n minus 1. So this multiplication is actually a pending job. We have not done multiplication. So when this function will be called with 1, it will return 1 here, right? It will return 1 here, and there is no further
recursion. So wherein we have written factorial 1, it will be replaced by 1, and 1 into 2 will be a value. It means 2. 1 into 2 means 2. That will be returned to the calling statement, that is factorial 2. So where in place of factorial 2 we'll get 2. 2 into 3, 6 will be passed to factorial 3, and 6 into 4, 24 will be passed to factorial 4, and 24 into 5, 120 will be passed to factorial 5. और factorial 5 किसने कॉल किया था? ये वाले स्टेटमेंट है. तो इसको क्या वापस मिलेगा? 120, एंड दिस विल बी डिस्प्लेड. सो ये हमने कल डिस्कस किया था. इसी के साथ हमने 2 स्टेटमेंट्स और डिस्कस किए थे यहाँ पे. वो स्टेटमेंट थे 2 प्रोग्राम्स और डिस्कस किए थे हमने, जिसमें एक में रिकर्शन को हमने पेंडिंग किया था और एक में हमने रिकर्शन को पेंडिंग नहीं किया था. यानी रिकर्शन को नहीं, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, एक में हमने प्रिंट स्टेटमेंट को पेंडिंग किया था और एक में प्रिंट स्टेटमेंट रिकर्शन से पहले एग्जीक्यूट हो गया था. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले प्रिंट हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है और रिकर्शन भी हो रहा है, इसलिए कोई पेंडिंग जॉब नहीं है. जबकि यहाँ देखा जाए तो रिकर्शन पहले होने की वजह से प्रिंटिंग जो है वो पेंडिंग हो रही है. राइट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अगर इसको हम 5 के साथ कॉल करते हैं तो पहले 5 प्रिंट हो रहा है और फिर 4 के साथ रिकर्शन हो रहा है. इसी तरह से जब 4 के साथ रिकर्शन हो रहा है तो 4 प्रिंट हो रहा है और फिर 3 के साथ रिकर्शन हो रहा है. यानी यहाँ पे 5 4 3 2 1 प्रिंट होगा. जबकि इस केस में क्या हो रहा है, 5 के साथ रिकर्शन होने पर 4 के साथ रिकर्शन हो जाता है और प्रिंटिंग ऑफ 5 पेंडिंग चला जाता है. पेंडिंग है ये, प्रिंटिंग ऑफ 5. फिर इसी तरह से प्रिंटिंग ऑफ 4 पेंडिंग जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1. जब 1 प्रिंट होगा, जब कंडीशन होगी ये वाली ट्रू, जब n की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंट होगा 1. उसके बाद जो मोस्ट रिसेंट प्रिंटिंग है वो 2 की प्रिंटिंग होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरह से हमारी जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 1 2 3 4 5. ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी. ऑलराइट, आज मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ काम कर रहा हूँ. 1 मिनट में ज़रा पेन ठीक करता हूँ अपना, फिर मैं वापस आता हूँ. Okay, so I'm writing one more example. You just check and tell me the answer. Okay, I'm just writing the question. Okay, you just have to tell me the answer of this. I'm writing a code actually, and you have to find out the answer of the code. Okay, it's a kind of output wala program, right? So we have a function, and the name of function is say draw, and we have n here. Now I'm writing the same condition is n is equal to 1, print 1. We can write print n also because both are same. Now in else I am saying print n and is equal to gap draw n minus 1 print n and is equal to blank. Okay, so you have to tell me the answer of this code, output of this code. Okay, आप लोग कभी भी इसका आउटपुट बता सकते हैं. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, write a recursive function to print a to the power b. Okay, so I'm writing a simple method for this, then I'll write a recursive method. I'm just reminding you that how can you find out a to the power b. वैसे तो Python में it's very easy, you simply write a into b, you will find the power, but we have to write a method. Okay, so how can we do so? I am writing a simple method, def
power a and b, we have taken two variable. Now I am taking one variable 1 for I in range 1 comma b plus 1, since b is the power. Okay, then I am saying p is equal to p into a, and here I am saying return p. Okay, so this is the method. So if I call this method with 5 and 3 and store answer in k, then how will this execute? This is not a recursive method, it's a simple method, right? So if I call this function with 5 and 3, so the value of a will be 5, b will be 3, and we can have one variable p here, so p will be 1. Now this loop will run for 1, 2 and 3, okay, because the value of I is ranging from 1 to 3. Now p is equal to p into a, so if I multiply p and a and store answer in p, so p will be 5 when I will be 1. Next time again p into a will be 25, because p is already 5, 5 into 5 25, and for third time p is 25 into 5, so it will be 125, right? So this is a to the power b in simple method. Let's write a recursive function for this. Shwani, very late, beta. Okay, so def power. Okay, so I'm giving the same name, and we need two variables, two arguments to find out the value of a to the power b. एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, रिकर्शन में अवॉइड टेकिंग अ न्यू वेरिएबल. रीजन क्या होता है? इन रिकर्शन वैल्यू कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड. ओके, रिकर्शन में वैल्यू एक्यूमुलेट नहीं की जा सकती. कैलकुलेट तो की जा सकती है, बट एक्यूमुलेट नहीं की जा सकती. ना इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वैल्यू एक्यूमुलेट हो रही है p में. So every calculation that you are doing is being stored in p, and p is also pertaining its last value. Okay, but in recursion we cannot hold last value in a function. We cannot hold last value in a function. Okay, we'll come to know about this gradually. So let's write the function. Now first of all we have to find out the terminating condition, right? So if I say a to the power b, so I can write a into a to the power b minus 1, right? We can write the same thing. For example, if I have to write a cube, so I can write a into a square. Alright, now if I have to find the value of a square, I'll say a into a to the power 1, and if we have to find out a to the power 1, then we can say a into 1. Now what is this 1? Or we can say a into a to the power 0. And what is the value of a to the power 0? It is always 1. Okay, so if power is 0, then the answer will be 1. So this will be our terminating condition. So we'll say if b is equal to 0, okay, then we have to return 1. Okay, can we write if b is equal to 1, return a also? Just think and tell me. Okay, can we write if a is equal to 1, if b is equal to 1, then return a? Can we write this? You just have to tell me after this example. Okay, so if b is equal to 0, return 1, and if it is not, then return a into power of a comma b minus 1. Okay, then this is over. Now you can call this method with some values, say 5 comma 3
and you can print K. Okay, let's have a dry run of this. How will this execute? So we have A here, that is 5. We have B here, that is 3. Now if I call this method power method from external call, so first calling will be with 5 and 3. Okay, so the value of A will be 5, B will be 3. Since B is not 0, because B is 3 now, it is not 0, then we'll return 5 into power of 5,2. ऑलराइट, जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है, 5 इंटू पावर ऑफ 5,2. जब रिकर्शन हुआ है तो वापस हम ऊपर गए और इस बार ये जो पावर वाला मेथड है 5,2, इसने कॉल किया 5 इंटू पावर ऑफ 5, बी की वैल्यू क्या आई थी इस बार 2, तो 2 - 1 क्या हुआ 1. Okay, now when this method will be called, it will call a method 5 into power of 5,0, right, because 1 has been passed this time, so 1 - 1 0. Now if I re-execute this, the condition that we have written here will be true. Okay, so it will return 1. So if 1 will be returned, so this will return 1 and 5 into 1 will be returned to this method. यानी यहाँ इसको काट करके हम क्या लिख सकते हैं 5 into 5 will be returned to this method, so it will be 25. Okay, and 25 into 5 will be returned to this method, so the value that will be received to K will be 125. Okay, so this is the example of पावर. ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बच्चों आपको आउटपुट के लिए. इसका भी आउटपुट निकालना है. इस क्वेश्चन को लिखने के बाद अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं. डेफ फन A, B, if A is equal to 0, return B, else return B mod A, A, and call this method for fun of 4024. Okay, क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन डिस्कस. ओके, और चलिए एक दो होमवर्क भी दे देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी. आई एम होल्डिंग ए स्क्रीन फॉर अ व्हाइल. और एक जो मैंने और आप लोगों को प्रोग्राम दिया था, ये वाला, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग. या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Okay, now the question for you is very simple. Write a recursive method to print sum of digits of a number passed as argument. Okay, if 436 has been passed, so you have to display answer 13. अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. हमने इसको while से किया था. while n is greater than 0, d is equal to n mod 10,
n is equal to n by 10 and sum is equal to sum plus d, and we have taken initial value of sum as 0. Then we have print sum. Okay, so this was the code जो हमने लगभग 6-7 महीने 8 महीने पहले लिखा होगा, जिस समय आप लोगों की वाइल लूप चल रही होगी. Okay, now we have to write a recursive method to print the sum of digits. Okay, इसमें terminating condition क्या होगी ये आप सोचिए. And how can we write this? Just try it. एक मैं चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ. हम अगर इस मेथड की बात करें तो हमने रिटर्न के साथ, ओके, आई एम मिसिंग अ फन हेयर, आई एम नॉट कॉलिंग द मेथड, सो इट विल बी फन. तो रिटर्न फन बी मॉड ए कॉमा ए. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकर्शन को रिटर्न के साथ कॉल किया है. यहाँ पे रिकर्शन फन विद रिटर्न. ओके, हेयर ऑल्सो आई हैव कॉल्ड रिकर्शन विद रिटर्न. ओके, if I talk about this method, I have not called recursion with return, and actually there is no return in this method. Okay, now what is the difference? Let's try some more programs. I am not calling this draw use with return. ठीक है, चलिए कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे भी मैंने रिटर्न के साथ शो को कॉल नहीं किया है, जबकि इस प्रोग्राम में फैक्ट को मैंने रिटर्न के साथ कॉल किया है. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एवरी टाइम आई एम नॉट कॉलिंग अ रिकर्सिव मेथड विद रिटर्न. समटाइम्स आई एम कॉलिंग विद रिटर्न, समटाइम विदाउट रिटर्न. ओके, सो यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. चलिए डिस्कस